Hey friends, today we will be studying the classification of lichens based on their growth forms or external morphology. Now we all know that lichens have a thyroid structure where a mycobiont, that is a fungal partner, houses a phycobiont, which is a algal or cyanobacterium partner. तो external morphology के basis पे देखें तो lichens are basically classified into three main categories, that is crustose lichens, foliose lichens and fruticose lichens. Crustose lichens के examples है graphis, crypta, rhizocarpon. फोलियोस लाइकन जो लीफी होता है उसके एग्जांपल है फाइसी एंड पामीलिया एंड फ्रूटिकोस लाइकन्स जो थोड़े श्रब लाइक होते हैं श्रब लाइक अपीयरेंस होती है उनका एग्जांपल है क्लेडोनिया एंड ऊस्टिया. नाउ लेट्स सी वन बाय देम one by one all of them in details. Okay, so crustose lichens जो होते हैं they occur as a very thin or thick crust over soil, rocks or tree barks. They are very closely adhered to the substratum जिसके ऊपर वो present होते हैं and they are very difficult to remove from the substratum क्योंकि वो बिल्कुल चिपके होते हैं अपने rocks और जो भी surface है उसके ऊपर. उनकी fruiting bodies जो है वो upper surface पे present होती हैं. Example is rhizocarpon. एंड इफ यू सी फोलियोस लाइकन्स तो फोलियोस तो होता है लीफ लाइक है तो उनका जो थैलस होता है वो फ्लैट होता है एक्सपैंडेड होता है लीफ लाइक शेप होती है उसकी एंड इट्स स्प्रेड आउट इन हॉरिजॉन्टल लेयर ओवर द सरफेस. ये सबस्ट्रेटम से अटैच होता है बाय राइजोट लाइक आउटग्रोथ्स जिसको हम राइजेंस बोलते हैं एंड दे कैन बी इजिली डिसमेंटल्ड विदाउट डैमेजिंग द सबस्ट्रेट. तो इसको हम उतार सकते हैं हटा सकते हैं. एग्जाम्पल है स्पाइसिया और पामीलिया. देन वी हैव फ्रूटिकोस लाइकन्स जो कि अपराइट होता है हैंगिंग टाइप के लाइकन्स होते हैं ब्रांच्ड होते हैं बुशी थैलस होता है इनका और सबस्ट्रेट से लटका रहता है. They can be erect or pendant like. They are flat, cylindrical, ribbon like और बहुत अच्छी branching होती है इसमें and they are attached only at the base by a flat disc and they can be removed from the surface by hand. Then, besides these three main categories, we also have an intermediate growths like leprose, filamentous or gelatinous lichens. Leprose जो होता है, they basically have a powdery or granular surface. Thallus जो बना होता है वो algal cells or fungal hyphae का ही बना होता है and it lacks an outer skin or cortex and it's a very basic kind of structure. Example is Leperia and Canna. Then we have a filamentous lichens जिसमें growth form जो है वो पूरा mass होता है thin stringy non-branching hairs का जिसको फिलामेंट ऑफ alga भी कहते हैं. They are also present trichome forming cyanobacteria and unlike other forms the filaments of fungus do not determine the shape. So कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे alga भी dominating होता है. Example is Ephibae. Then we have gelatinous lichens. तो यहाँ पे जो फाइकोबायोम पार्टनर होता है वो एक साइनोबैक्टीरियम होता है जो एक पॉलीसेकेराइड प्रोड्यूस करता है जो पानी को अब्जॉर्ब करके रखता है और रिटेन करके रखता है. जब गीला होता है ये जेलाटिनस होता है जेल लाइक होता है and it becomes brittle when dry, so it can easily break off. Example is Colima tenax. So yeah, that's all for today.